Good morning students, I am your Farzana ma'am, your English teacher from your school St. Joseph Public School. Hope you are ready with your book and open your book to page number 12. I had stopped over here when we were continuing with it in a previous lecture, and hope you remember the reading and little bit explanation of it. Here we go children. I will read this first para again. Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. So, the person who is writing this letter and the person whom he met on the war field, that they are now enjoying their Christmas and they are wishing each other, just a brief before what we read it, and they are now introducing each other. So, these two persons are the captains of their troop. Both the troops, in front is your Frizz, and here the person who is writing this letter is from Tommy, that is from England. So, by this reading up till now we came to know that there is two troops, the two areas they are having a war with, that is Germany and England, and but now they are not having a fight, instead they are introducing each other and they are telling about each other to and they are enjoying their treat of that Christmas. So, let us see how they are doing it. So, here the person who is writing the letter is, up till now you came to know his name is Jim McPherson, and the person whom he introduced himself, let us see who is, but this person is a teacher. So, just remember there is a question, it will be asked that what occupation do they do before fighting this war against each other. So, our McPherson is a school teacher from Dorset in west of England. Ha, Dorset, he smiled. I know this place, I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked. Cooney, how we talked! He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So, out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left on your wonderful Christmas cake, Cooney. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Cooney. So, here McPherson is addressing all these incidents to his wife Cooney in the letter, and all about what he did on that Christmas morning, how he enjoyed with the opponent person, that is from Germany. His name is, by here you can come to know, his name is Wolf. Let us see over here, Hans Wolf. So, this is the name of the person to whom McPherson is talking, and Hans Wolf, though he is from Germany, but he is still able to talk in English very well. And how he came to know that why his English is so good? Because he is very fond of the novels, and in his school days he learnt about the books written in English,
and the most famous writer which he enjoyed reading, that is Hans Wolff, is Thomas Hardy, and his favorite book, Far from the Madding Crowd. So, this is the name of the book written by Thomas Hardy. He is a very best writer of England. So out there in no man's land, और वो जो एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, यानी कि अब वो किसी का लैंड नहीं है, लैंड के लिए तो लड़ते हैं हम, वॉर किसके लिए होता है, लैंड के लिए होता है, तब वो जो उन लोग कर रहे थे, what they were doing it was saying that now it's not no man's land, it is everyone's land, okay. And he also talked about Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy. These are the characters in this Far from the Madding Crowd, Troy and Dorset. So here these all characters are from Thomas Hardy's novel, that is Far from the Madding Crowd. You should know a little bit about these authors, these writers and their characters in their books. It's a very good knowledge if you have it, okay. और उनके बारे में और क्या पता चला मैकफर्सन को, हैंस वुल्फ के बारे में, that he had a wife, और उनका बेबी एक सन अभी अभी बॉर्न हुआ था just 6 months ago, और उनको वार्ड पे आना पड़ा. As I looked about me there were hurdles, और फिर आसपास मैकफर्सन ने देखा कि बहुत हंगामा हो रहा है. इधर हर्डल्स मतलब बहुत इधर उधर सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं. कौन कौन नाच रहा है, कूद रहा है? इट इज़ खाकी विथ ग्रे, यानी कि खाकी का जो कपड़ा है वो इंग्लैंड वालों का है, द यूनिफॉर्म कलर, एंड ग्रे कलर इज ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ हैंस वुल्फ, दैट इज जर्मनी. एंड ऑल नो मैंस लैंड. और क्या क्या कर रहे थे उन लोग? स्मोक कर रहे थे, दे वर स्मोकिंग, दे वर लाफिंग, एक दूसरे से बात कर रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग, eating whatever they had, and I shared. और उन्होंने क्या शेयर किया? क्रिसमस केक जो कूनी ने बनाया था. दिस क्रिसमस केक वॉज कवर्ड विथ मार्जिपैन, इट इज़ नोन एज मार्जिपैन, ओके. मार्जिपैन क्या होता है? केक ही होता है, बट इट इज़ कवर्ड विद अ शुगरी सिरप, एंड इट मेक्स द कवरिंग ऑफ केक इन अ वेरी थिक फॉर्म, मीन्स एक कुरकुरा जैसा कवरिंग हो जाता है शुगर का, एंड टेस्ट वेरी वेल, और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है. आई हैव टेस्टेड इट चिल्ड्रन. इवन इफ यू हैपन टू गो इन जयपुर एंड यू हैपन टू गो टू दिस Mongeries, you can have this marzipan. It's mostly available in all these cake shops. Okay, what's the best he had ever tasted? तो हैंस वुल्फ ने क्या बोला उनको कि उनका जो मार्जिपैन है उन्होंने ऐसा टेस्टी कभी खाया ही नहीं है. और ये मैकफर्सन भी अग्री करते हैं, कूनी को बता रहे हैं ये सब. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हम एक दूसरे की हर बात अग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ तुम सही हो, हम सब सही हैं, बट फिर भी हम एक दूसरे के एनिमी हैं. ये बड़ा ही सैड फीलिंग है. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी. और ऐसी पार्टी जो उन्होंने इन्जॉय की मैकफर्सन ने और हैंस वुल्फ ने, ऐसी कभी नहीं हुई. उन्होंने ऐसा कूनी को बताया. लेट्स रीड फर्दर. Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew it was Tommy against Frizz, out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in a football match. No children are orphaned, no wives become widows. I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say. Okay, let's understand this para. तो किसी ने पता नहीं, हमारे मैकफर्सन को पता ही नहीं चला कि किसने फुटबॉल लाया, बट फुटबॉल आ गया और दोनों पार्टीज जो हैं फ्रिज एंड टॉमीज, दे स्टार्टेड प्लेइंग. नाउ इट वाज
war against each other by football. Okay, great coats were dumped in piles और एक दूसरे पर उन्होंने अपने कोट्स निकाल के इकट्ठे एक के ऊपर एक रख दिए. पाइल्स मतलब ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू मेक गोल पोस्ट. तो गोल पोस्ट बनाने के लिए उन लोग ने अपना कोट जो है निकाल के एक के ऊपर एक रख दिया. उसका जो पुलंदा बन जाता है उसको पाइल्स बोलते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट रिस. और वो लोग इतना अपने आप में बिजी हो गए थे फुटबॉल खेलने में. हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन. और वो दोनों जो बातें कर रहे थे बैठ के, वो दोनों ने एक दूसरे के तरफ देखा, चीयर किया ज़ोर से और क्लैप हैंड्स किया, हाथों तालियां बजाईं और अपने पैरों को ज़मीन पे पटका, स्टैम्पिंग जो होते हैं, स्टैम्पिंग फीट, टू कीप आउट द कोल्ड. और ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन लोगों को ठंड लग रही थी. तो ठंड भगाने के लिए उन लोग ने अपनी हथेलियाँ रगड़ी, वो क्लैपिंग हैंड से यानी क्लैप करके तालियां बजा के उसको भी गर्म किया हथेलियों को, और अपने फीट्स को भी ज़मीन पे स्टैम्प किया ताकि वो भी गर्म हो जाए, उनके पैर और जो भी हैं. और उनके जो एक दूसरे के जो खेलते खेलते वो हाँप रहे थे, वो एक दूसरे के ब्रीदिंग ऐसा लग रहा था कौन सी ब्रीदिंग कौन कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के साथ इतने हिल मिल गए थे वो लोग. ही सॉ इट टू एंड स्माइल. और फिर ये सब बात एक दूसरे की देख के एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे. जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल. तो वुल्फ ने क्या बोला, हैंस वुल्फ ने, कि आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. हमें चाहिए कि ऐसे ही खेल कूद के हमें ये वॉर ख़त्म करनी चाहिए. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज. इस फुटबॉल मैच में ना ही कोई मरता है, ना ही कोई बच्चे हमारे ऑर्फन होते हैं, यतीम होते हैं, ना ही हमारी बीवियां जो हैं विधवा होती हैं. आई वुड प्रेफर क्रिकेट. तो मैकफर्सन ने बोला इंग्लैंड के हैं तो नेचुरली उनको तो गेम यही अच्छा लगेगा क्रिकेट. उन्होंने बोला आई प्रेफर क्रिकेट. आई टोल्ड हिम दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली. तो फिर हम श्योर हम ही जीत जाते क्योंकि जर्मन्स आर वेरी बेस्ट प्लेयर इन देयर फुटबॉल एंड टॉमीज इंग्लैंड्स आर वेरी बेस्ट प्लेयर्स इन देयर क्रिकेट. वी लाव्ड एट दैट. और फिर एक दूसरे के ऊपर हंसे और टुगेदर वॉच द गेम. और वो दोनों फिर से वो गेम देखने लग गए. ओके चिल्ड्रन, आई स्टॉप ओवर हियर. होप यू आर एंजॉइंग योर रीडिंग एंड you are really and we'll be starting our reading of next page, that is page number 13 in our next lecture. Till then children, you are keep your reading on and just let me know what you haven't understood. Actually it is very easy to understand if you read it twice or thrice. It's keep you busy with your reading and as well as understand the lesson. Bye children.